students. So let's come up with a new exciting session of after motion in 2D's next part, relative motion. Yes, we will be doing relative motion, but before doing relative motion, we have to do something else than the relative motion which are actually important to us. Now, sir, a relative motion what we actually require? Amader relative motion ache ki? First of all, in relative motion, we have a beautiful concept of rain man. Yes, beautiful. Sir, point is why not rain woman? Yeah, anything, any gender. Okay. So now again, arekta ki hoy? Sir, we have river problem. Arekta ki hoy? What is we have? We have aircraft. Exactly, aircraft. Arekta ki hoy? We have the train problem. So, a chatte problem we will discuss. But before going into this segment, we have to do some else segment. We have to do some other thing which are ingredients of this thing. What is that? So, that is basic 2D motion. That is what, yes, we will be doing. We will be starting off basic 2D motion. Yes. এই জিনিসটা আমাদের জানতে হবে. We need to know what is basic 2D motion. Sir, what is this basic 2D motion? Sir, আপনি vector পড়েছেন. Yes, we have done vector. So what is the difference of vector and 2D? Yes, because in each and every segment of the 2D motion we require the vector portion. Okay, মানে আমাদের এর মানেটা কি? First, every expression must be in vector form. Every expression must be in vector form. প্রতিটা expression কোন ফর্মে থাকবে? স্যার vector ফর্মে থাকবে। স্যার next portion কি হবে? স্যার when we are talking about 2D motion slash আমি একটা লিখে দিচ্ছি 3D motion. Sir, why 2D? Yes. এইখানে মাথায় রাখতে হবে কি motion are axis dependent. Sir, motion are axis dependent. এই কথাটা খুব কনফিউজিং না? বলে হ্যাঁ, কথাটা what it means? It means anything happening in x-axis. Anything happening in x-axis is only responsible for the x-axis variables. Anything happening in y-axis is only responsible for y-axis variable. Anything happening in z-axis is only responsible for z-axis variable. তার মানে x-axis, y-axis, z-axis আমরা সেপারেটলি স্টাডি করব। স্যার, তার মানে এক্স অ্যাক্সিসে motion is only responsible for x-axis variables. Sir, y-axis, yes, y-axis motion is only responsible for y-axis variables. Z-axis motion is only responsible for z-axis variables. তার মানে x-axis এ কি কি ভেরিয়েবল থাকে? স্যার কি কি ভেরিয়েবল থাকে? স্যার একটু দেখা যাক কি কি ভেরিয়েবল থাকে। স্যার তাহলে এবার স্যার ভেরিয়েবলস বলতে কি? স্যার what we have position. We start off with position, then we come up with velocity. Fantastic. Then we come up acceleration. অসাধারণ। এই তিনটে জিনিস বলো পারফেক্ট। এই তিনটে জিনিস আমাদের দরকার। তার মানে এই তিনটে জিনিস we need axis dependent. Yes, আমাদের কি রকম দরকার? We need axis dependent. তাহলে if I have this three we can find anything. we can have distance আমরা বার করতে পারবো, we can find displacement আমরা এটাও বার করতে পারবো। So we need to have the variables in axis way. আমরা axis way তে আমাদের ভেরিয়েবল দেখব।
তাহলে স্যার কিরকম আমরা অ্যাক্সিস ওয়েতে দেখবো স্যার ক্যান বি গো ফর অ্যান এক্সাম্পল বলে ইয়েস উই উইল বি গোয়িং ফর অ্যান এক্সাম্পল ওকে তাহলে কি মানে মাথায় রাখতে হবে এক্স অ্যাক্সিসে যা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস মানে সেপারেট আর ইয়েস নাও উই উইল বি মুভিং উইথ সাম standard equations. Now we will be moving with some standard equations. So what are the standard equations? First, now এইগুলো মাথায় রাখতে হবে, these are the most important things, standard equations. Sir কি পড়েছিলাম ছোটবেলায়? Sir v along x axis is dx dt dx by dt. Sir x what is x? X is the position along x axis, so we write v along y axis dy by dt. Sir v along z axis is equals to dz by dt. Similarly sir আমরা acceleration বলতে পারি, yes we can talk about the acceleration. Acceleration along x axis is only responsible dvx by dt. Perfect. Acceleration along y axis dvy by dt. Acceleration along z axis dvz by dt. Now এটা বেসিক্স স্যার, এটা একদম বেসিক্স। এরপর আমরা হায়ার ভার্সনে আস্তে আস্তে মুভ করছি। তার আগে এই যে পুরো জিনিসটা আমি বললাম, ফুল থিং ইউ হ্যাভ টু গেট দিস থিং ক্লিয়ার, হ্যাভ আ লুক ওভার দিস থিং, দেন উই উইল বি প্রসিডিং অন টু দ্য নেক্সট বোর্ড. Till then, please have a look.
তাহলে what we have seen the vx, vy, vz, ax, ay, az. Now what we will be doing, sir, we will be moving on to some beautiful aspect of this thing. So first, what is the first thing, sir? We will be doing position r x2 minus position r x1. Now from this thing আমরা এখান থেকে পাচ্ছি, we are getting it from this thing is integration vx dt from t1 to t2, t1 to t2. মানে many a times we something like write it like this, say position at time t2 minus position at time t1. Yes, that's the basic thing. Position at time t2 minus position at the time t1. Similarly, sir, what we can write? Position at the time t2 for the y-axis minus position at the time t1 is equals to from t1 to t2 v of y dot dt. Perfect, sir. আপনি কি আবার ভেক্টর ইউজ করবেন? No, we won't use vector, sir. তারপর স্যার z একদম সেম। স্যার এইবার v of x at t2 minus v of x at t1 মানে we are only concentrated of the velocity along x-axis, শুধু x-axis from t1 to t2, acceleration along x-axis dot dt. Similarly, okay, let's use a new pen. Okay, similarly, what we can write? Velocity along y-axis of t2 minus velocity of y-axis minus t1 is equals to t1 to t2 acceleration y-axis dot dt. বলে yes sir, we can write this thing. Sir, আর কি লেখা যায়? আরো একটা ফরম্যাট দেখাচ্ছি। See, these are the general formats, okay? Do you people know कि acceleration along x-axis can also be written as v along x-axis dvx dx. মনে পড়ে? We have done this thing in younger days. So this is one of the crunchy equations which we actually require. From this thing, what we can do? So we can do vx at x2 whole square minus v at x1 whole square is integration ax dx from x1 to x2. Now this is something very good. So this board is completely filled with all the necessary equations. After this board, we will be actually delving into some numericals. How to do the numericals, कैसे हम लोग solve करेंगे, वही पूरा चीज देखेंगे. Till this thing, we have to understand the basics of how to solve the equations in this case. So you have to go through each and every equations well, then we will do one by one, each and every sum one by one. Till then, please have it.
Yeah, Shubro, you are correct. Shubro, you are correct. Are mistakenly that was something v at x2 minus whole square v at x1 whole square এটা by 2 হবে. So sorry, mistaken. Okay, ax into dx from x1 to x2. Yeah, you are absolutely correct. Yeah, this will be this thing. Sorry, টুটা মিস হয়ে গেছে, টুটা মিস হয়ে গেছে। আর ইয়েস, আগেরটায় ওটা ভি দুটো টি টু হয়ে গেছে, তো ইট উইল বি ভি এক্স অ্যাট টি টু মাইনাস ভি এক্স অ্যাট টি ওয়ান, এটা টি ওয়ান হবে, ইজ ইকুয়ালস টু ইন্টিগ্রেশন অফ এ এক্স ডট ডিটি from T1 to T2. Yeah, these are the two corrections of the last board. Okay, last board a correction. Please have a look. Now, after this, what we will be doing? We will be doing a beautiful sum. What we will be doing? We will be doing a beautiful sum. Chalo, sir, what is the beautiful sum? Let's have an example. Chalo, let's give you an example. Let's see, we have a position vector. See, I'm doing it in a vector form. You have to keep a look. We are doing it in a vector form. 3t square minus 4 into I cap plus 4t minus 5 into j cap plus 6t cube k cap. Okay, now this is the position vector. This is the position vector. What we need to find? First question, প্রত্যেকে first আমি এই পুরো জিনিসটা আমি দেখাবো. Okay, first we need to find the displacement. We need to find the displacement from t equal to 0 to t equals to 2 second. Part 1. Next, we have to find v average. We have to find the average velocity from t equals to 1 second to t equals to 3 second. Next, what we need to find? We need to find the velocity instantaneous, the mod of the velocity instantaneous at time equals to 3 second. Next, what we have next? So we have to find the average acceleration from t equal to 0 to t equal to 2 seconds, and we need to find the speed at time 2 second. Sir, 1 2 3 4 5. Yes, 1 2 3 4 5. Another, sir, another thing. Yeah, I am giving you another question also. We have the average velocity, instance, average acceleration, speed. Okay, fine, we have the 5 parts. You do it. No distance right now. Okay, first 5 parts. Acha, let me do it for you. Need not to worry. First part, how you get the displacement? First part I am doing it for you. How you get the displacement? So displacement it was. So displacement means position at the time t2 vector way minus position at the time t1. Just one thing, position at the time t2 minus position at the time t1 from 0 to 2 seconds. From 0 to 2 seconds. So r at 2 seconds. First vector, sir, place 2 in terms of t. Place 2 means 2 square, 4 into 3, 12 minus 4, 8 I cap. सभी लोग देख लो, 8 I cap प्लस यहाँ पर 2 बिठा दो, 8 minus 5 क्या होगा सर? प्लस 3 j cap प्लस 2 यहाँ पर बिठा दो, 2 का क्यूब क्या हो गया? 8 into 6 प्लस 48 k cap. 48 के कैप. अच्छा, मेरा कैलकुलेशन में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है. लास्ट लाइव क्लास में एकदम आखिरी में एक 2 गलत हो गया था. ओके, इफ यू गो थ्रू द लास्ट लेक्चर एक 2 गलत हो गया, एकदम लास्ट आखिरी वाला सम में मैंने 2 गलती से नहीं लिखा था. सो यू हैव टू कीप अ नोट. ओके एवरीवन, प्लीज कीप अ नोट. इफ आई डू एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक्स प्लीज लेट मी नो. सो एंड most important thing, r at 0 means position initially at 0. Place 0 over here. So what do you have? Minus 4 I cap. Place 0 over here. Minus 5 j cap. Place 0 over here. Plus 0 k cap. अब सर क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना था. सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे? सर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो. सो सर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन. अगर दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा? 12 आई कैप. बढ़िया. दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा? 8 जे कैप. बढ़िया. दिस माइनस दिस करोगे तो क्या आएगा? 48 के कैप. वाह,
we get a beautiful answer of this displacement. So this is done. अब सर क्या है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम T1 टू T2. सर एक बार मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये हुआ, चलो इसको मैं पार्ट ए बोल रहा हूं, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई. तो अभी पार्ट बी कर रहे, ये था तुम्हारा पार्ट ए. सर पार्ट बी क्या है, एवरेज वेलोसिटी. चलो मैं एक बार छोटा सा लिख दे रहा हूं. वी एवरेज का मतलब क्या है, वी एवरेज का मतलब हुआ सर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट T1 से लेकर T3 तक डिवाइडेड बाय द टाइम, मतलब 3 - 1. मतलब डिस्प्लेसमेंट वैसा ही निकालना है, एकदम निकालना है, बस टाइम से डिवाइड कर दो. अब क्या है, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एट t = 3 सेकेंड. नाउ ये हुआ सबसे इंपॉर्टेंट चीज. अब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा सर, आप यही चीज को डेरिवेटिव कर दो, एक बार डिफरेंशिएट कर दो. 3t² का क्या डेरिवेटिव होता है, t² का होगा 2t, 2t इंटू 3 60. तो ये हो गया 60 i कैप. 4 का बनेगा 0. 4t का क्या होगा सर, 4j कैप, और 5 का हो गया 0. अब t³ का मतलब क्या है, 3t², 3t², 3 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस क्या हो गया 18, 18t². अच्छा 18t² इंटू k कैप, 18t² इंटू k कैप, 18t² इंटू k कैप. ये हो गया तुम्हारा v इंस्टेंटेनियस का एक्सप्रेशन. ये हो गया तुम्हारा v इंस्टेंटेनियस का एक्सप्रेशन. अब किस सर क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड एट 3 सेकेंड. सो सर यहां पर बैठा दो v एट 3 सेकेंड वेक्टर. सो t के जगह 3 बैठा दो तो क्या आएगा सर, 18 i कैप बढ़िया है, 4j कैप बढ़िया है, प्लस 3, 9 इंटू 18, 9 इंटू 18 कितना होगा सर, सर 162 k कैप. ये हुआ तुम्हारा वेक्टर नोटेशन. अब मॉड का मतलब क्या हुआ, डू यू नो व्हाट इज मॉड? यस सर वी नो व्हाट इज मॉड. सर मॉड क्या हो गया, v एट 3 इसका मॉड रूट ओवर ऑफ 6² प्लस 4² प्लस 162 का होल स्क्वायर. ये हुआ तुम्हारा लास्ट एक्सप्रेशन. सो हमने क्या किया, हमने पार्ट ए कर लिया और हमने पार्ट बी कर लिया. अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पार्ट सी करेंगे. अच्छा सॉरी, सी भी कर लिया, चलो सी भी कर लिया, डी करेंगे, ई करेंगे. सर डी और ई एकदम इजी है, पहले ये चीज पूरा देख लो, बहुत कुछ लिखा हुआ है, और ये लास्ट का दो करेक्शन ये भी देख लो. तब तक एकदम देख लो, मैं थोड़ा हट जा रहा हूं.
ওকে শুভ্র ইউ আর কারেক্ট, এটা 18 স্কোয়ার হবে, ইয়া ফাইন, দ্যাট ওয়াজ সিলি মিস্টেক, ওকে আই হ্যাভ চেঞ্জড ইট, ওটা আমি 18 করে দিয়েছি। ওকে so now sir we will be doing with the part D. Sir part D, what we have in part D, sir before that আমরা একটা acceleration বার করিনি। yes sir acceleration, sir in vector form, yes in vector form, acceleration in vector form 60, sir এটা মানেটা কি কি শিখেছিলাম, ডেরিভেটিভ অফ ভেলোসিটি উইথ রেসপেক্ট টু টাইম। সো 60 এর কত হয়, 60 এর হয় 6i ক্যাপ, 60 এর হয় 6i ক্যাপ, 4 এর কত হয় স্যার, 4 এর হয় 0, 4 এর হয় 0, ইয়েস। আর এটা 18t স্কয়ার, t স্কয়ারের হোয়াট ইজ t স্কয়ার, 2t, তাহলে দিস উইল গো উইথ 36t k cap, this will go with 36t k cap. So this we have the acceleration in vector form. Now do we require all this thing? We don't require all this thing, we will see to it, but before that what we have the, sir part D, average acceleration. Now what is the concept of average acceleration? Simple concept, it means velocity at time t2 minus velocity at time t1 whole divided by t2 minus t1, simple. Up sir, do I require all this thing? No, you don't require all this thing, I'm just saying for the sake of the saying. Okay, and the part E is speed, speed. So what we have in the speed maneta ki, what is meant by speed? It is v instantaneous mod, speed is nothing but v instantaneous mod. So sir, where you require all this thing? I don't require all this thing, but if it such happens in question number F, it says ki acceleration instantaneous at time 1 seconds. If the question goes like this, then what you have done? So sir, in the part F we would have written, okay fine, acceleration in vector form at 1 second is given as 6i cap plus 36 k cap, simple in vector form, and acceleration mod is given as root over of what, 6 square plus 36 whole square, ev some unit. Now this is the style of writing acceleration magnitude, first in vector form then in the magnitude form. Okay, so this part F can come in many examinations. So part D, part E and part F, we have done all the 6 parts of this beautiful question where we are given the position vector, and we can find all the everything. Next part, yes, next type, there is another more important type, is the velocity given, then we can find all the 3 things. Okay, we will see it, but before that please have a look as a whole. Okay, please have a look.
So right now we have another question with velocity on the screen, yes, and we have to find all these 5 parts. Okay, so please, I'm giving you just 3 minutes, yes, 3 minutes to solve all these things. After this 3 minutes, I'm going to solve each and everything on this board. Okay, so please, your time starts now. Do it.
So sir, we have our 3 minutes done. Let's check it out how to solve it one by one. So part A, this is part A. Now we have to find the position. Now here we go on with a beautiful concept, how to find the position. I have talked about ki position at T2 minus all the vectors position at T1. Position at T2 minus position at T1 is integration velocity v dt. Sir, velocity is a vector dt from T1 to T2. Perfect. Sir, how to solve it? So this is all this three one by one. Yes, one by one we will be doing this thing. So चलो देखते हैं. सर पहले T1, सर देखो तुम्हारा जीरो से लेकर ऑलरेडी तुम्हारा सो पोजीशन एट जीरो तुम्हारे पास क्या था? सो जीरो आई कैप था, जीरो जे कैप था, प्लस जीरो के कैप था. ये तीनों था. अब वेलोसिटी का डेरिवेटिव कैसे करोगे? देखो मैं अलग से कर रहा हूं. सो जीरो से वन, देखो ये वाला का डेरिवेटिव. सो 3t माइनस 2 dt आई कैप dt प्लस 0 to 1, ध्यान से 4 dt j कैप बढ़िया है. 0 to 1 3t square dt k cap. Now obviously you will get an answer. ये देखो ये इसका तो आंसर निकलेगा. अब तुमको क्या चाहिए था? तुमको चाहिए था पोजीशन एट 1 सेकेंड. सो पोजीशन एट 1 सेकेंड is equals to position at 0 second plus 0 to 1 vdt. तुम्हें मिल जाएगा. You get the answer. मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, तुम लोग कर लोगे. I know this thing. Now अब है next acceleration. Now part B is the acceleration. Sir, acceleration निकालने के लिए first find the generalized form of the acceleration. Now इसका generalized form निकालो. सर कैसे निकालेंगे? सर देखो acceleration का फंडा क्या है? सर dv by dt. परफेक्ट. एक एक करके करो. 3t का क्या होगा? सर सिर्फ 3 आई कैप, सिर्फ आई कैप. 2 का 0 बढ़िया है, प्लस सिर्फ 4 है, 4 का 0 j कैप. सर 3t स्क्वायर, 3 रहने दो, t स्क्वायर का 2t k कैप. वाओ. तो सर ये क्या बनेगा? 3i कैप प्लस 6k कैप. वाओ, वी गेट दिस थिंग. यस, दिस इज एक्सेलरेशन. अब तुमको अगर सपोज बाई चांस तुमको बता दिया होता कि मॉड ऑफ द एक्सेलरेशन बताए, तो तुम क्या करते? सर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. नहीं बता दिया फिर भी. नाउ वी हैव एवरेज एक्सेलरेशन पार्ट सी. आई एम डूइंग इट ओवर हियर. वाओ. पार्ट सी, द एवरेज एक्सेलरेशन. नाउ एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब मैंने अभी दिखाया था, वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 2 सेकेंड बाई 2 माइनस 0. सिंपल. यहां पर पहले 2 डालो फिर 0 डालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो. ऑब्वियसली यार इसको वेक्टर में डालो. वेक्टर, ऑब्वियसली वेक्टर. एवरेज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर. इफ यू वांट टू कीप इट इन वेक्टर फॉर्म, वेल अगर तुमको फाइनल मैग्नीट्यूड चाहिए, फाइनल मैग्नीट्यूड इसका मॉड चाहिए, तो इस पूरा चीज का क्या बना दोगे? एक मॉड बना दो. पहले वेक्टर बाद में मॉड. सो ये हुआ तुम्हारा. अब है तुम्हारा पार्ट डी, स्पीड एट टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड. नाउ पार्ट डी, सो स्पीड एट टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड. तो टाइम इक्वल्स 3 सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल यार, वेलोसिटी एट 3 सेकेंड निकालो. सिर्फ 3 सेकेंड बैठा दो वहां पर वेक्टर में. पहले यस वेक्टर में. सर क्या होगा? 3 into 3 9 minus 2. सर 7 आई कैप बढ़िया है, प्लस 4 जे कैप बढ़िया है, प्लस 3 स्क्वायर 9 into 3 27 के कैप. अब सर इसका मॉड क्या लिखोगे? सर रूट ओवर जो मैंने सिखाया था. लेट्स सी, आई वोंट डू एनी सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक्स. यस, दिस इज करेक्ट. Lastly, maximum distance along positive x-axis. Yeah, this is something very beautiful. इसी को देखना पड़ेगा. सर मैक्सिमम डिस्टेंस, इसका मतलब क्या हुआ? वो x एक्सिस, नेगेटिव x एक्सिस जाते जाते वो रुक गया. सर मैक्सिमम डिस्टेंस along नेगेटिव x एक्सिस तभी होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस तभी होगा when the body stops at नेगेटिव एक्स एक्सिस. नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ बॉडी रुकेगा. कब बॉडी रुकेगा? कब?
सर ये हुआ तुम्हारा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अब वेलोसिटी अलोंग, चलो यहां पर मैं पार्ट ई दे रहा हूं। सर वेलोसिटी, सो सिंपल वेलोसिटी एक्स एक्सिस जीरो कब होगा? नेगेटिव ऑब्वियसली। तो ये वेलोसिटी अलोंग माने, अब देखो सॉरी, ये हुआ नेगेटिव, तो वेलोसिटी जीरो हुआ तुम्हारा 3t माइनस 2, 0t हो गया 2/3। वेलोसिटी एट जीरो मतलब एक्स जीरो क्या था? -2। देखो इनिशियली नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ -2 था, कब जीरो बना? 2/3 सेकंड में जीरो बना। और सर कुछ एक्सेलरेशन था। बोला सर वो कैसे पता चलेगा एक्सेलरेशन है या नहीं? सर आपने एक्सप्रेशन निकाला था ना, ये देखो तुम्हारा ऑलरेडी एक्सेलरेशन क्या था। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस? ओके, सो चलो सर मैं यहां पर, ये हुआ तुम्हारा 3, तो मैं कहां पर लिखूं यार, कहां पर लिखूं? कोई जगह नहीं है, चलो मैं बता दे रहा हूं, यहां पर ही बता दे रहा हूं कि एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या था तुम्हारा? +3 था। वेलोसिटी इनिशियल था -2, टाइम था 2/3। तो तुम निकाल सकते? बोला हाँ सर कैसे निकालेंगे? सर एक छोटा सा, कहां पर लिखे, कोई जगह है नहीं, चलो एक बॉक्स बना के लिख देते, यहां पर एक बॉक्स बना के लिख देते, तुम लोग देख लो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, नेगेटिव एक्स, तो क्या बनेगा? ut प्लस हाफ at², क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। u के जगह तुम क्या बिठाओगे? -2, टाइम के जगह क्या बिठाओगे? 2/3 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन का क्या बिठाओगे? 3, और टाइम की जगह क्या बिठाओगे? सर 2/3 का होल स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इसके बाद वो डायरेक्शन चेंज किया। तो जब तक वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ रुका, वही हुआ तुम्हारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। यस, एक ही पूरा बोर्ड है, बहुत सारा कुछ मैंने लिख दिया यहां पर, थोड़ा ध्यान दो, अच्छे से देखो, फिर नोट डाउन करो। ओके, पहले अच्छा से देखो ये पूरा चीज को एक एक करके, फिर नोट डाउन करो, और जो मैंने सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं किया उसको भी करो। इसके बाद मैं एक और टाइप में जाऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्चुअल रिलेटिव मोशन के ऊपर एंड लोकस के बारे में। प्लीज हैव अ लुक।
Okay, so sir, we have another sum on this board. Okay, now this I will do it on my own. I won't give you time because yes, I have to do many things. This is the last type. What is we have over here? Sir, we have acceleration over here. What we have? We have acceleration over here. So first of all, how to find the velocity from acceleration? In general expression is the velocity at time t minus velocity at 0. Sir, 0, sir, why 0? It could have been anything, it could have been anything. बट सर देखो यहां पर एक चीज दिया हुआ है तुम्हारा, द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. सो बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मींस वी एट 0 इज 0 आई कैप 0 जे कैप प्लस 0 के कैप. सर इसी का मतलब मैंने इसीलिए रेफरेंस को क्या माना सर, 0 ही माना, क्योंकि बॉडी 0 से शुरू हुआ और तुम्हारा वेलोसिटी का एक जनरल एक्सप्रेशन चाहिए था. क्या लिखोगे सर? एक्सेलरेशन dt फ्रॉम 0 टू t. एक्सेलरेशन dt फ्रॉम 0 टू t. चलो सर इसको थोड़ा सॉल्व करते. पहले 0 टू t, सर 3t माइनस 1 dt आई कैप प्लस 0 टू t 2 dt j कैप प्लस 0 टू t सर माइनस 3t dt k कैप.
ये हुआ तुम्हारा वेलोसिटी। अब क्या है सर, तुम्हारा पोजीशन वेक्टर एट एनी टाइम टी। अब देखो तुम्हारे पास ये भी दिया हुआ है, ये भी तुम्हारे पास दिया हुआ है। सो पोजीशन वेक्टर एट टी माइनस पोजीशन वेक्टर एट जीरो। सर क्यों, कुछ भी दिया रहता था, मैंने बस जीरो को एक रेफरेंस लिया था। अब सर क्या लिखोगे, सेम सर यहां से जीरो से लेकर टी, बहुत बढ़िया। सो क्या हो गया, पूरा जो ये वी टी था ना, डी टी, परफेक्ट, ये बनेगा तुम्हारा पोजीशन वेक्टर। अब कैसे सॉल्व करोगे, पार्ट ए कैसे सॉल्व करोगे, चलो सर देखते हैं पार्ट ए कैसे सॉल्व करेंगे। एवरेज वेलोसिटी, सो फैंटास्टिक, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ सर, सिंपल सर, आपका डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू 1 सेकेंड माइनस, मतलब सॉरी, टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 1 सेकेंड बाई 1 माइनस 0। अब पार्ट बी यहां पर पार्ट ए बन गया, पार्ट बी एवरेज एक्सेलरेशन। नाउ ये इजी है तुम्हारे पास, एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब, सर एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, एवरेज एक्सेलरेशन इस मींस वेलोसिटी एट टाइम 1 सेकेंड वेक्टर माइनस वेलोसिटी एट टाइम 0 सेकेंड 1 माइनस 0, और वेलोसिटी का एक्सप्रेशन तुम्हें वहां से मिल जाएगा, बढ़िया है। अब पार्ट सी, स्पीड एट टाइम 1 सेकेंड। स्पीड मतलब जो तुम्हारा वेलोसिटी मिलेगा वहां पर 1 डालो और मॉड डाल दो, तुम्हारे पास स्पीड आ जाएगा। तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला, जनरल एक्सप्रेशन, और यहां से पोजीशन का जनरल एक्सप्रेशन निकालना। यही था तुम्हारा इस सम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो अब जब तुम ये पूरा चीज निकाल लिया, यू कैन गेट ईच एंड एवरीथिंग। So by this, what we have done, we have seen the general 2D motion। हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को चेंज करते करते हम लोग कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग आ रहे लोकस के बारे में, और हम लोग आएंगे रिलेटिव मोशन के बारे में। यस, सो प्लीज हैव अ लुक। मैं जा रहा हूं, पूरा ध्यान से अच्छे से सम को नोट डाउन करो और सोल्यूशन को ध्यान से करो प्लीज।
Now, sir, let's start with another topic of locus. Then we will be doing few sums and we will be moving with the topic of relative velocity. Yes. So first of all, what is a locus? Sir, this is something very, very interesting. Many questions have come in the competitive examination from this concept of locus. Sir, ये है क्या? Sir, locus कुछ भी नहीं है. This is a equation of a path. Equation of a path followed by a body. Means it is equation of a path followed by a body. Yes, sir. और ये path का equation कैसे नजर आएगा? How you identify this thing? Sir, this path has equation should be time independent. सर याद करो इसको, टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? टाइम इंडिपेंडेंट होना चाहिए. इस पाथ को तुमको टाइम इंडिपेंडेंट. नाउ यू हैव टू सॉर्ट इट आउट. सर तुम्हारे पास क्या दिया रहेगा? सर मतलब तुम्हारे पास आर जो एक्स है ये हो गया एक्स, तुम्हारा जो वाई हो गया आर वाई, ये वाई. So you have to form a relation with x and y. You have to form a relation. Sir, what we need to do? Chalo, let's have a look. We have to form a relation with x and y where there will be no time. Sir, वहां पर time नहीं रहेगा. Where we will have no time. Okay, sir, अब कैसे इसको solve करेंगे? Sir, कैसे? चलो एक example कर लेते. वेलोसिटी तुम्हारे पास दिया हुआ है 3t i प्लस 4j कैप. चलो ये है तुम्हारा वेलोसिटी. अब तुमको क्या बता दिया? वी हैव टू फाइंड द लोकस निकालो. सर ये देखो, ये है तुम्हारा x कंपोनेंट, ये है तुम्हारा y कंपोनेंट. चलो इसको मान लेते vx और ये मान लो तुम्हारा by. कैसे? क्योंकि ये है तुम्हारा j और ये है तुम्हारा i. बढ़िया है. अब सर देखो x is written as what? X is written as integration of vx dt. Fantastic. Y is written as integration of what? vy dt. Now sir, assuming yes, यहाँ पर एक assumption, assuming at t equal to 0 the particle is at origin. Assuming that at t equal to 0 the particle is at origin. चलो बहुत बढ़िया है. चलो सर इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं. सर x को फिर क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ 3t dt. सर ऑब्वियसली ये 0 to t, यस ऐसा होना चाहिए, 0 to t होना चाहिए. हम लोग अगर ये तुमको एज्यूम कर रहे हो तो डायरेक्ट 0 to t की कोई जरूरत ही नहीं. तो ये बन गया 3t²/2. अब y क्या बनेगा? सर इंटीग्रेशन 0 to t vy क्या था? सर सिंपल 4dt. तो ये हो गया तुम्हारा 4t. अब सर टाइम को कैसे एलिमिनेट करेंगे? सर देखो टाइम को एलिमिनेट कैसे करोगे? देखो x बन गया 3t²/2, y बन गया 4t. अब y² क्या बनेगा? सर 16t². तो यहां से इन दोनों को डिवाइड कर दो. तो इन दोनों को अगर डिवाइड कर दो x/y² क्या आएगा? 3/32. नाउ दिस इज एन इक्वेशन. सो सर अब देखो मैं एक बार वापस लिख रहा हूं. 3y² इज इक्वल टू 32x. 3y² इज इक्वल टू 32x. अब इसका क्या नाम है? कुछ नाम है सर. इसका नाम है एक पैराबोलिक पाथ. इसका नाम क्या हो सकता है? दिस इज अ पैराबोलिक पाथ. यस, बहुत सारा पाथ हो सकता है. सर्कुलर पाथ हो सकता है, स्ट्रेट लाइन पाथ हो सकता है, पैराबोलिक पाथ हो सकता है, एलिप्टिकल पाथ हो सकता है, और ऐसा भी पाथ हो सकता है जिसका नेम तुम्हें मालूम नहीं. तो ये नेम कैसे, क्या पाथ है, ये हम लोग डिसाइड करेंगे. जस्ट लाइक दिस थिंग. दिस इज जस्ट अ सैंपल. आफ्टर दिस थिंग वी आर मूविंग इनटू सम अनदर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन दिस थिंग. इसके पहले इसको एक बार अच्छे से देख लो. हैव अ लुक.
चलो आगे बढ़ते, वी हैव द 3 सम्स इन बोर्ड। चलो एक एक करके मैं ही सॉल्व करूंगा, एक बार ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल सर यहां से शुरू करते। ओके चलो सर इसका लोकस तुम्हें निकालना है, हाँ सर निकालना है। तुम्हें R0 अगर स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है तो बढ़िया है, अगर नहीं मेंशन किया हुआ है तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब द बॉडी इज एट द ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। तो सर यहां पर एक एक करके लिखो, Vx क्या हो गया 3, बढ़िया है। Vy क्या हो गया 2। मैंने क्या सिखाया था, अभी क्या बोला, x एट t माइनस x एट 0 इज इक्वल टू 0 टू t vx dt, बढ़िया है सर। सिमिलरली ये x एट t क्या हो गया, x एट 0 का मतलब क्या, i कैप प्लस v एट x क्या है 3, सर ये हो गया 3t, तो ये बन गया i कैप, तो ये बन गया 3t प्लस 1 i कैप। सिमिलरली y एट t क्या बनेगा सर, ये देखो माइनस j कैप प्लस यहां पर क्या था सर 2t j कैप, तो ये बन गया 2t माइनस 1 j कैप। अब सर तुम्हें t को एलिमिनेट करना है, हाँ सर मुझे t एलिमिनेट करना है, तो क्या लिखेंगे, सिंपल देखो x माइनस 1 3t, वाओ इक्वेशन 1। यहां पर y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2t। सो दोनों को डिवाइड कर दो, इफ यू डिवाइड बोथ दिस थिंग, x माइनस 1 बाई y प्लस 1 3/2, वाओ सर दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन, यस। सो दिस इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो एक स्ट्रेट लाइन का सैंपल मुझे मिल गया। अब सर ये वाला, चलो ये वाला करने के पहले हम चलो ये वाला कर लेते थोड़ा। वेलोसिटी ऑफ x क्या हो गया साइन ओमेगा टी, चलो मॉड। वेलोसिटी ऑफ y क्या बन गया कॉस ओमेगा टी। अब सर तुमको पता है क्या सर, ये अगर x निकाले हम लोग, सर दिस इज अ टाइप ऑफ समथिंग सर, इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी 0 टू t, y अगर निकाले 0 टू t cos ओमेगा टी, ऑब्वियसली dt। अब देखो साइन ओमेगा टी का क्या होता है सर, मुझे नहीं पता बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा। सर ये होता है माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। बस एक बार थोड़ा सा इसको जान लो और ज्यादा कुछ जाने की जरूरत नहीं। y हो गया साइन ओमेगा टी बाई ओमेगा। सर आपने कैसे लिखा, चलो मैं ऊपर लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ mx dx is equals to minus cos mx by m. Similarly, integration of cos mx by m is equals to sin mx by m. अब सर देखो तुमको ओमेगा टी को हटाना है, तो ये देखो x ओमेगा is equals to minus cos ओमेगा टी, y ओमेगा is equals to sin ओमेगा टी। सर हम लोग छोटे जब थे क्या किए थे, स्क्वायरिंग अप एंड एडिंग, इन दोनों को स्क्वायर करो एंड ऐड करो। If I square it up and add, sir, x square omega square plus y square omega square is equals to 1. Wow. Sir, ये बनेगा क्या, x square plus y square is equals to 1 by omega square. This is an equation of a circle. So lastly मैंने क्या देखा था सर, हम लोग ने देखा था सर ये है एक स्ट्रेट लाइन, ये आया एक सर्कल। अब आ रहे सर बीच में सबसे इंपॉर्टेंट सम, ये देखो, अरे सर एक सेकेंड सर, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है आपका 2x। सर ये कैसे इक्वेशन है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस इज डिपेंडिंग अपॉन द x कोऑर्डिनेट। भाई मैंने तो पहली बार देखा, हाँ है। अब वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस इज डिपेंडिंग अपॉन टाइम, कैसे करेंगे सर, नाउ सर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब इट इज एट द ओरिजिन। चलो सर सिंपल x निकालो ना, x को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं v एट x dt 0 टू t, बढ़िया सर बोल सकते हैं। सर क्या हो गया सर, देखो 3t स्क्वायर बाई 2, सर क्या हो गया सर 3t स्क्वायर बाई 2। अब सर क्या है, अब देखो v एट y को क्या मैं ऐसे स्टाइल करके लिख सकता हूं, ट्वाइस x की जगह, अरे x तो तुम्हारा निकल गया, 3t स्क्वायर बाई 2 बिठा दो। ओ माई गॉड, यस वी कैन डू इट, वी कैन। तो ये बन गया तुम्हारा सिंपल 3t स्क्वायर।
अब सर y निकालो, y क्या हो गया, इंटीग्रेशन 0 टू टी 3t² dt, बढ़िया है, ये बनेगा टी क्यूब। वाह। सो अल्टीमेटली क्या आया सर, अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्या आया, x आया तुम्हारा 3t²/2, y आया टी क्यूब। सर क्या आप सॉल्व कर सकते, बोला हाँ सर सॉल्व कर सकते, बहुत ही ईजी है, x³ डाल दो, x³ डाल दो, तो ये क्या भैया 27/8 t⁻6। सर y² डाल दो, दोनों को डिवाइड कर दो, x³/y² इज इक्वल टू 27/8। अब सर ये इक्वेशन किस चीज का है, किस चीज का इक्वेशन, सर मुझे पता नहीं किस चीज का इक्वेशन, ये एक इक्वेशन है जिसका नाम मुझे पता नहीं बट इक्वेशन है। यस, सो ये है तुम्हारा बेसिस ऑफ लोकस। और भी टफ सम्स आ सकता है इस लोकस से, हम लोग देखेंगे बाद में, व्हेन वी विल बी डूइंग आवर डीबीपीज वी विल सी दिस ब्यूटीफुल सम्स। और भी बढ़िया सम्स करेंगे एकदम लास्ट में, जब पूरा एकदम एक्सटेंसिव न्यूमेरिकल क्लासेस रहेगा तब हम लोग और भी बढ़िया सम्स करेंगे इसके ऊपर। आज तो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स का इंपैक्ट हो रहे हैं। सो बिफोर दैट दिस बोर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड, अच्छे से देखो, अच्छे से लिखो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ अगले टॉपिक पे। ओके, प्लीज हैव इट।
सो सर चलो, यस वी आर ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। यस सर, ये अभी रिलेटिव वेलोसिटी, सर रिलेटिव वेलोसिटी मतलब यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव मोशन, यस वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिव मोशन। सर बिफोर गोइंग टू रिलेटिव मोशन, सर व्हाट इज रिलेटिव मोशन, है क्या ये रिलेटिव मोशन, कैसे समझेंगे रिलेटिव मोशन को? सर एक ही बार एकदम दिमाग में फिट कर लो, दो चीज होता है, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जर्वर। सर रिलेटिव मोशन में हमारे पास दो चीज चाहिए, एक है ऑब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जर्वर। एक एग्जाम्पल तुमको मैं बता रहा हूं, जब तुम किसी ट्रेन में जा रहे हो और बाहर तुम सीनरी देख रहे हो, तुमको क्या लगता है कि अरे भाई मैं बैठा हूं और पूरा जो मोशन, पूरा सीनरी पीछे चले जा रहे हैं एकदम। कभी तुमको ये लगता है कि हम आगे जा रहे हैं? एकदम नहीं लगता है कि हम आगे जा रहे हैं। हमें हर वक्त यही लगता है कि हम बैठे हुए हैं और पूरा जो सीनरी है वो पीछे जा रहे हैं। क्यों ये होता है? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस? व्हाई वी फील? सर वी आर नॉट फीलिंग दिस थिंग, दैट्स द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग। Our brain thinks this way. What? Our brain thinks this way. Yes. So first important point of relative motion is observer always thinks to be at rest. Observer always thinks to be at rest. ये दिमाग में फिट कर लो, ऑलवेज वो सोचता है कि भाई मैं रेस्ट पे हूं, और वो पूरा जो मोशन उसी के बेसिस पे ऊपर वो करेगा। ओके, अब मोशन कैसे क्या होगा वो चलो एक बार देखते हैं। सो सर व्हेन द ऑब्जर्वर फील्स टू बी एट रेस्ट, बाकी का मोशन क्या होता है? नाउ द मोशन of the object, the motion of the object will be the superposition, will be what? The superposition मतलब किसी एक के ऊपर, superposition of what? Superposition of its own motion plus inverse motion of the observer। देखो, मैं सोच रहा हूं कि मैं रेस्ट पे हूं, मैं किसी को जब देख रहा हूं तो मैं उसका एक्चुअल मोशन देख नहीं पाऊंगा। क्यों? मेरा दिमाग सोच रहा है कि मैं रेस्ट पे हूं, तो मैं क्या करूंगा, खुद का मोशन का इनवर्स मतलब उल्टा उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर सुपर इंपोज करूंगा। भाई यही ब्रेन है, दैट्स व्हाई दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्रेन। हमारा ब्रेन क्या क्या सोच लेता है किसी को नहीं पता, बहुत आगे सोच लेता है कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है, एक्चुअली वो होने वाला है या नहीं वो बात नहीं, वो सोच लेगा ये कुछ हो सकता है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग कि आवर ब्रेन एक्चुअली थिंक्स अ लॉट। ओके, सो ये थिंक कर लेता है कि हम लोग रेस्ट पे हैं और हमारा पूरा इनवर्स मोशन उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है। ओके, हो सकता है ऑब्जेक्ट पूरा अपने आप अलग मोशन पे जा रहे हैं, पर वो सोच के बोल देगा कि भाई तुम तो पीछे जा रहे हो, वो एक्चुअली पीछे जा ही नहीं रहे, पहले उसको समझो। नो, वो नहीं समझेगा, वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, जजमेंटल बन जाएगा। ओके, तो यही है ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट खासियत। चलो एक एक सम इजीली देखते। फर्स्ट, हाउ टू राइट दिस थिंग वेक्टोरियली। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू observer, velocity of object with respect to observer. Sir, it is what? Sir, it is vector, is given as velocity of, sir, object plus inverse of the velocity of the observer. Inverse मतलब एक माइनस साइन, इनवर्स मतलब द माइनस साइन। यस, इनवर्स मतलब माइनस साइन। ये हुआ तुम्हारा एक्चुअल, सर सब कुछ। यस, and using this concept, the problem will be solved। सर व्हाट? सर देखो, टाइम अनचेंज्ड है, टाइम को तुम चेंज नहीं कर सकते हो।
इक्वेशन ऑफ मोशन अनचेंज रहेगा विद द रिलेटिव कॉन्सेप्ट। मतलब सर विद द रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? विद द रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होगा? अब जब भी तुम बोलोगे कि देखो पार्ट ए, इफ एक्सीलरेशन रिलेटिव, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, एक्सीलरेशन रिलेटिव इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड वाइज। सर दो केस हो सकता है, 1D मोशन हो सकता है या फिर 2D मोशन। मैं हर वक्त इसको, चलो एक्सीलरेशन को ऐसे लिख दो सर, ax प्लस ay। सर हो सकता है सिंपल ये हुआ। अब एक्सीलरेशन रिलेटिव बी कंपोज्ड ऑफ ax रिलेटिव प्लस ay रिलेटिव। सिमिलरली वेलोसिटी रिलेटिव इज vx रिलेटिव प्लस vy रिलेटिव। ऐसा ही सोचना पड़ेगा और सारा जो तुम्हारा इक्वेशंस होगा वो रिलेटिव के ऊपर ही होगा। कैसे क्या सॉल्व करेंगे ये हम लोग एक एक करके देखेंगे। बिफोर दैट प्लीज हैव अ लुक ऑफ ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो व्हाट वी डू, वी विल एंड दिस टुडेज लेक्चर विद दिस लास्ट कॉन्सेप्ट एंड अगले वाला क्लास में वी विल डायरेक्टली स्टार्ट ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स with this concept. So next class, please don't miss it, the most important class of motion in 2D and relative motion we will be doing, and we will be completing the whole relative motion in the next class. Till then, look it, you will have the time to note it down, and we will be doing the rest of the topic in the next class. Bye bye.